107.8। मैं हूं आरजे भावना और ऑन बिहाफ ऑफ रेडियो मानव रचना शिक्षण संस्थान मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहती हूं आज के इस खास समारोह जिसका नाम है आरोहणम यानी राइजिंग हाइट। और आरोहणम इसलिए क्योंकि वाकई हमने अपने आप को, अपनी लिमिट्स को बढ़ाकर इन 14 सालों में थोड़ा सा राइज कर देखा है। और वो राइजिंग किस चीज में है आप सभी को बताना चाहती हूं। जिस प्रकार की आप सभी जानते हैं कि आज रेडियो मानव रचना अपने 14 साल कंप्लीट कर रहे हैं और हम अपना 15th फाउंडेशन डे मना रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ किसी के साथ साथ एक छोटा सा अटेम्प्ट हमने करने की कोशिश की थी और वो था 150 घंटे का नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो। और उसके साथ साथ हमने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया और वो रिकॉर्ड था एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ये नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो यूं तो म्यूजिकल हो सकता था और इसमें हम ढेर सारे गाने चला सकते थे, आपको बहुत सारा एंटरटेनमेंट दे सकते थे, लेकिन हम एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है और यूनाइटेड नेशंस ने कुछ SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं। इन गोल्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने न सिर्फ 150 घंटे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़कर जो हमारे बीच बैठे हैं, धन्यवाद कहना चाहूंगी। इतनी बारिश में भी और उन 150 घंटों में भी रात के 2 बजे हो या फिर 12 बजे आप हमारे साथ थे, तो जोरदार तालियां आप सभी के लिए। आमंत्रित करना चाहूंगी अब हमारे डायस पर बैठे सभी गेस्ट को कि वो इस कार्यक्रम की शुरुआत करें लैंप लाइटिंग से। दीप प्रज्वलन के लिए आप सभी का आमंत्रण। सा सा रे सनी नी सनी पापा नि प म प म प ग म प नि धा धा ध स प प प नि म म प म ग म ग म प नि सा आ आ आ हमारे मुख्य अतिथि और हमारे सभी गेस्ट हमारे बीच हैं, इनका स्वागत करना चाहेंगे हम हमारे प्रांगण में। और उसके लिए आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर NC वधवा सर को कि आज हमारे चीफ गेस्ट श्री गौरी शंकर केसरवानी जी, एडिशनल डायरेक्टर CRS मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उनका स्वागत करें। उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया था। मुझे लगता है कि उसमें हमें कोई कसर नहीं छोड़ी। और यद्यपि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, हर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को 5% एडवर्टीजमेंट, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट अलाउड है, परंतु हमने उस तरफ हमारा कोई निगाह ही नहीं गया। हमने उसको अग्रेसिवली कभी वो ही नहीं किया। रूटीन में कोई किसी ऑफिशियल डिपार्टमेंट से या किसी प्राइवेट किसी प्रमोटर, कारपोरेट प्रमोटर से कोई ऐड आ गई तो हमने की। अदरवाइज आवर मैनेजमेंट वाज वेरी लिबरल, वेरी काइंड। आफ्टर वी लॉस्ट आवर फाउंडर डॉक्टर O.P. Bhalla ji, similarly under leadership of Madam Satya Bhalla ji, our president Prashant Bhalla ji, our vice president Amit Bhalla ji, we were receiving lot of hints, inputs, guiding inputs, and
good funding so that we keep on doing our role very effectively. Okay, so on the outset, I would like to congratulate Radio Manav Rachna for their 15th Foundation Day. And what a day. So my name is Shubha Priya, and I'm honored to serve as the official representative for India Book of Records and Asia Book of Records, along with our managing editor, Mrs. Neeja Roy Chaudhary, adjudicator, Mr. Sugata Das, and Mr. Kapil Atri, our senior media official. We are immensely proud of Radio Manav Rachna's accomplishments. Dr. Gurjeet Kaur Chawla and Team Manav Rachna brought this moniker, "Let's Do It," to life by planning such a feisty, gutsy extravaganza with a popular radio show. And they have not only raised awareness about the pressing issue of sustainability, but also demonstrated the power of radio as a medium of education, inspiration, and a positive change. For over 18 years, India Book of Records has been dedicated to capturing and preserving remarkable accomplishments like these across a wide range of fields. We are committed to upholding the highest standards of excellence in our record-making process. Asia Book of Records is a platform where the record holders of all major national Book of Records, including India Book of Records, Vietnam Book of Records, Indochina Book of Records, Laos Book of Records, and Nepal Book of Records, meet to compare, compete, and claim the title of Asia Book of Records holder. Today, Asia Book of Records holds a strong database of 40,000 entries. Now, I would like to invite Mr. Sugata Das to announce the record that has been achieved by Radio Manav Rachna. Good evening, everybody. Good evening, Radio Manav Rachna. So, the record for the longest non-stop live radio show on sustainability. Radio Manav Rachna 107.8 FM set the record for the longest non-stop live radio show on sustainability at the Manav Rachna Educational Institutions, Faridabad, Haryana. 5 radio jockeys or RJs conducted a total of 150 hours, 1 minute and 20 seconds of non-stop live radio show. And not to forget all the experts who had come from various walks of life, who participated and apprised the listeners on sustainability based on the Sustainable Development Goals in all spheres of life. The attempt was started on 10:03 a.m. on July 29th, 2023. Sorry, June 29th. Sorry. Yeah. And ended at 4:04 p.m. on July 5th, 2023, after covering a total of 150 hours as confirmed. So now I would like to invite Mrs. Neeja Roy Chaudhary, who is our Managing Editor and Managing Director, to present the records and say a few words. Thank you. Please, ma'am. Good afternoon, distinguished guests, and everybody present here. Today, I stand before you with great pride and joy as we all have come together to celebrate an extraordinary achievement. Manav Rachna Radio 107.8 FM has created history with their record-breaking extravaganza, where they played a talk show for constantly 150 hours. This remarkable feat has earned them a well-deserved place in India Book of Records and Asia Book of Records. And today we are here to applaud them with their outstanding accomplishment. First and foremost, I want to extend my heartfelt congratulations to Dr. Amit Bhalla
Dr. N.C. Wadhwa, the Director General of Manav Rachna Educational Institutions, and Ms. Gurjeet Kaur Chawla, the Director of Radio Manav Rachna. We are thankful to the leaders for their guidance and inspiration that made this incredible record possible. I want to acknowledge the talented RJs, radio jockeys, technical experts, the student volunteers, and other support staff. They have shown great dedication and talent in their work, captivating listeners and spreading awareness about the Sustainable Development Goals. Their commitment and enthusiasm were impressive during the show. Furthermore, I want to express my gratitude to all the experts who contributed their valuable insights and knowledge during the memorable show. Through this marathon show, they have not only informed the audience but also ignited a spark within each individual to make a positive change in the world. On behalf of India Book of Records and Asia Book of Records, I extend my warmest congratulations to Radio Manav Rachna 107.8 FM and its entire team. Your achievement serves as an inspiration to us too, and together we can make a real difference in the world, I believe. Thank you so much.